Hello, everybody. Thank you for joining our latest feature of IndieCast. Today, we decided to change up our practice a bit, and we are here today in Daulatpur village with Gagan Bhai and Puneet Bhai of Delhi Dehat. We have done a podcast with them in the past also, and our main focus with them has been the visibility of the communities that are indigenous to Delhi. We have Dhruv Bhai with us, who's also a friend of the podcast and familiar to the podcast. एंड सर आप भी देवांश भाई ऑल्सो आप अपने आप को भी इंट्रोड्यूस कर लीजिए एक बार सर. हेलो माय नेम इज़ देवांश। ये नजफगढ़ के पास है, छावला के पास पड़ता है दौलतपुर। यहाँ पे का है 1500 के आसपास लोगों की आबादी है। तो भाई आज पॉडकास्ट के लिए आए हैं, देखते हैं क्या होता है। सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे आज गांव के। हाँ. तो हमारा जनरल फोकस तो हमेशा रहा है विजिबिलिटी अबाउट कम्युनिटीज़ दैट बिलोंग टू दिल्ली एंड उससे रिलेटेड जो अर्बन प्लानिंग और अर्बन लैंड डिग्रेडेशन इश्यूज भी एसोसिएटेड हैं उसको हम लोग काफ़ी रेगुलरली हाईलाइट भी करते रहते हैं और उसके बारे में चर्चा भी करते रहते हैं. सो दिस इज़ जस्ट एन अटेम्प्ट टू डू दैट अगेन. सो लेट्स गेट योर ओपनिंग थॉट्स गगन भाई. भाई दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू दौलतपुर, क्योंकि हम दिल्ली देहात पे एक साल से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो मैं दौलतपुर के बारे में कई बार पढ़ता आया हूँ. बट आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम ऑल्सो लिटिल स्कैर्ड कि जो एक सुंदर गांव है दिल्ली का एक एस्पेक्ट जो हमें नज़र नहीं आता है. एंड आई थिंक अगर दिल्ली देहात के पूरे प्रोसेस में हम ऐसे गाँव की जो एक तरीके की ईमानदारी है विद स्पेसेस लोग वो भी बचा पाएँ तो दैट वुड बी ग्रेट भाई. राइट. एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं आज यहाँ आया एंड आई कंसिडर माई सेल्फ अ वेटरन इन दिल्ली अफेयर्स. मैं गुड़गांव में रहता हूँ, दिल्ली हर दिन ट्रैवल करता हूँ, सो आई फील लाइक आई नो एवरी नुक एंड कॉर्नर. बट आज पहली बार यहाँ आके लगा, एज द व्यूअर्स कैन ऑल्सो सी, हमारे पीछे एक्चुअली खेत हैं अभी भी एग्जिस्टिंग. And this reminded me of my own ancestral village in Bihar where I originally belong. So the fact that there are pockets in Delhi which are still रर्बनाइज्ड एज इन रूरल अर्बन एक मिक्स बन जाता है और उन पॉकेट्स की वेलफेयर और विजिबिलिटी की चर्चा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी रहेगी. दिस इज बेसिकली वी आर डूइंग दिस कर्टसी ऑफ ध्रुव हियर, सो वील गिव ध्रुव एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एंड गिव हिज थॉट्स अबाउट द विलेजेस ऑफ दिल्ली. ध्रुव आप भी एक बार. Thanks, Raj. Honestly, I'm a little lazy now because of the samosa and the dhoop. But I know what you're saying about. I understand where you're coming from because I felt the same way. So my father's village, which is Nagpur, it is essentially commercialized now. And even when I was born, none of our agricultural lands remained. So that had always been a part of Delhi town. This place, however, which is my Nana's village, was urbanized much later. In I think 2008, it came under the master plan. It was notified in the zonal development plan. Later in 2019, it has been identified as a particular zone for the purposes of it calling it an urban village. But even for me, it was sort of an exotic trip whenever I used to come here because I could not see such kinds of agricultural lands anywhere in Delhi and even in my ancestral hometown. But uh, I'm grateful to this place because it has also, in some ways, in a very ancillary way, in fact, uh, kept me quite connected with the community that I come from. And interestingly, this is a village of Afarias who are also part of the community which came from Tijara, and it formed part of the Ahirwal estate. The entire thing ranging from this place till Rewadi, the entire Rewadi estate. So I think this also forms part of the Beast Dabar villages of Yadavs. I think पुनीत भाई को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी इस चीज़ पे. उस पे मैं अबाउट the cultural aspects, etc. I think the other day when Gagan Bhai and I were at that exhibition, Delhi Dehat wala, तो तब भी शायद I think we met a couple people from the Beach Dabur villages. So it forms a part of a larger cultural
pocket as well. Before I bring in Puneet bhai, I think आप लोगों ने you guys did something with the Ambedkar University Delhi also. Then you guys were involved in the exhibition. और अभी because ध्रुव भाई mentioned master planning, I will pick your brains on that. तो एक बार आप starting from पुनीत भाई एक बार आप उसके बारे में थोड़ा बताइए. Then we'll get down to issues about master planning and the future of villages of Delhi. Yeah. So Thank you, Raj. I think Dr. Shekhar took us under the leadership of Dr. Shekhar Tokas. He provided us the opportunity to tell the platform to showcase, our work as well. And this exhibition was under his project called 360 Dehat, and we were happy to collaborate with universities like Ambedkar. And interestingly, I was not able to attend the exhibition, but there were a lot of people from this region who were saying कि हमारे गांव में भी आओ ना, like document us as well, because we still have fields left, we still have very different uh, things to show to you. Because क्या है कि हमारा जिन हम गांव से आते हैं ना, तो हमारा पर्सपेक्टिव इज वेरी very bleak, very narrow about that. And the more we bring diversity, especially to this region of what we call as Ahirwal, and how it tragically came under Delhi, and then all of these things, whatever happened to the people. I think it's very important that we uh, document such villages, also bring in their perspective as well, because हमारा perspective कहीं ना कहीं वो साउथ दिल्ली वाला, और कहीं ना कहीं वो it's very, again, it's very limited. Yeah. मैं एक्चुअली इसमें बिफोर आई ब्रिंग इन गगन भाई आई थिंक एन अटेम्प्ट इज़ ऑल्सो टू इंश्योर विजिबिलिटी. कुछ दिन पहले इसमें ध्रुव का भी एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव रहा होगा कि आप दिल्ली में डीपीएस में पढ़ रहे हो वेर यू आर effectively seeing Delhi for the metropolis it is. And I mean, I think many people, outsiders who have come into the city, have not been uh, exposed to the visibilities of the villages of Delhi as they should have been. कि existing communities थी यहाँ पे, हैं यहाँ पे. और I think जैसा आपने 360 देहात project के बारे में बताया, और these episodes that we were doing, every time somebody's asked me आपका इस podcast से attempt क्या रहेगा, my one word answer to that is visibility, right? Because how do you ensure policy without doing visibility first? So Gagan bhai, what are your thoughts on that? Anything you would like to add? I think the common village identity is something that I'm really intentionally trying to build, and trying to build for it's both inward and outer process. मतलब हम सब बोल रहे हैं दिल्ली के 360 गांव हैं, बट हम जो दिल्ली के गांव वाले हैं, उन्होंने ही वो 360 गांव नहीं देखे. माई अंडरस्टैंडिंग कमिंग फ्रॉम अ साउथ ईस्ट दिल्ली विलेजेस की द चैलेंजेस लाल डोरा, द चैलेंजेस ओवर पॉपुलेशन, द चैलेंजेस village, there's no body to maintain such villages. When I come to Daulatpur, and my idea really broadens up कि when I'm talking about the villages of Delhi, what are they? So I think for as for me individually, this is also uh, first of all making a larger village identity where people try to connect each other on the basis of this. कि जैसे अगर पंजाब में बोलेगा कि हम पंजाब के पिंडू हैं, so is there a common village identity कि when I meet a person from a Delhi village, irrespective of his caste, religion, gender, is there a connection that okay, I'm also from a Delhi village and we have a same pain that we're talking about? So I'm really grateful that we are doing this here. Right. बॉस आपने यू मेंशन द वेरी टेक्निकल लीगलाइज्ड टर्म लाल डोरा, जिसके बारे में मैं इंडियन एक्सप्रेस, लिंक्डइन, इन सब पे भी पढ़ता रहता हूँ. ध्रुव बॉस, यू आर अ लॉयर, गगन भाई, यू आर अ लॉयर. तो आप लोग डिसाइड करके, आई लाइक योर बोथ योर थॉट्स ऑन I think maybe a slight flaw in the way we do master planning, the way lal doras and all these things can cause challenges in development of villages and all of that. So let's get both your thoughts on it. तो आप After you, Gagan bhai. I just an introduction, and whatever I know is the parts of the villages which are acquired post independence of India. The idea was to take their agriculture land and leave that residential pocket. So that residential pocket was termed as a लाल डोरा villages. That there's a red tape. अब उसका बहुत सारे हिस्ट्री की, कभी एक लाल टेप डाल के मेजरिंग हुई थी, और उस टेप के पीछे जो टेप मतलब
जिसको मेजरिंग टेप कहते हैं, उसके पीछे जो जगह रहेगी रेजिडेंशियल, वो लाल डोरा रह गया, और जो बाकी जो एग्रीकल्चर लैंड थे वो तो एक्वायर हो ही गए थे. So there is a sense of, and I think the whole process is an othering process. When you say these are people beyond the लाल डोरा, it's like कि एक अलग से एवेन्यू, जैसे हम ऐसे अमेरिकन जब हम डेवलपमेंट देखते हैं ऐसे नहीं कहते ब्लैक एरिया है, समथिंग वेरी सिमिलर कि अच्छा ये लाल डोरा एरिया है. यहाँ कुछ और है, दिल्ली से कुछ अलग है, यहाँ की सोसाइटी, लोग, लॉज एंड पॉलिसी अलग है. तो हिस्टोरिकली तो वो प्रोसेस है. ध्रुव भाई. नहीं, वैसे मतलब that reminds me of something that I was just thinking about. I would love to pick your brain on that, Puneet bhai. So we've all known about the idea of alienation that Marxists keep on talking about. I think you, even when it comes to the development of Delhi, if you were to see Delhi, the Delhi town as the final product, and the laborer being the person who gave up his lands, he's equally alienated from the final product, right? Whatever, like we as outsiders, I mean, we're not outsider, we somewhere lie in the middle, fortunately or unfortunately. But काफी लोगों के लिए जो final developed Delhi है, that becomes a thing that usually alienates them, and they're never able to enjoy the fruit of their labor, if you can call that. But before that, I would want to know from you, Raj. See, legally speaking, there is an entire process that includes in discussions the stakeholders, which are also the people who are from villages, in the process of creating master plans. But that representation is often quite low because recently it has been digitized, a part of the process, and B, most of the people who come from rural backgrounds are unaware of any such discussions happening. So the initial master plans, when they were being prepared, even though the statutes created such privileges for them, वो कभी participate इतना कर नहीं पाए उन चीज़ों में. And again, because they also held very less white collar jobs, and they were also not as educated as the migrant population, they could not participate in it as much as my immigrants did, and which in turn it created master plans which were not at all considerate of the stories of people who had actually given up their lands for the implementation of those master plans. So I would first want to know from you, what do you think from a policy standpoint, because the statute, it sort of it promises that, but the implementation and the enforcement is quite different as from the object of the act, right? So outside of I thanks for that question, Dhruv. Outside of IndieCast, those who follow me on LinkedIn, etc., know that I keep track very tightly of policies related to urban land development, town and country planning, and generally, making the outcomes of our cities better. So this is something that I sort of follow very deeply. My understanding is that master planning in India effectively is a very bureaucratic and colonial process, क्योंकि the way we develop cities is that we don't keep in account the requirements of the people who live there. Rather, we allow it to create like these waves in a concentric circle, कि ये एपिसेंटर था, ये शहर की सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, पुराने मार्केट यहाँ हो गए, उसके अराउंड शहर बस concentric circles में ग्रो करे जा रहा है. तो उसमें फिर naturally, and I'm by no way, I'm not at all an anti business person, but the there is not naturally a lot of scope for profit making, and a lot of vested interest to come in those areas. So sometimes I figure that maybe master plan processes are kept intentionally locked. If you need to make any kind of policy that needs to give a good outcome, आपको सबसे पहले एक अच्छी स्टेक होल्डर मैपिंग करनी पड़ती है. तो ये मैं विजन, मेरे आइडिया ये रहा है कि जनरली जो रूरल कम्युनिटीज होती हैं, जो शहर के बाहर रहती हैं, उनको उस स्टेक होल्डर मैप में इंक्लूड नहीं किया जाता है. रादर इट्स जस्ट अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु विल डू इट. कुछ दो चार इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस और लॉबीइस्ट का प्रेशर उस पे हमेशा होता है, एंड दीज कॉन्वर्सेशंस आर ऑलवेज हैपनिंग बिहाइंड क्लोज डोर्स. आउटकम ये है कि एक दिन आएगा जब किसी पे इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट प्रेशर आएगा कि जी आप इतने खेत बेच दीजिए, आपको कल यहाँ से ये हाईवे निकलनी है. सो
and I'm not opposing this way of development. I'm just saying that make it more inclusive and create better outcomes. क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम लोग अभी मास्टर प्लानिंग करते हैं उससे हमारी सिटीज में ट्रैफिक इंप्रूव हो गया, या बहुत डीकंजेस्ट हो गई, या हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा हो गया। तो एक जैसा गगन भाई ने कहा कि आपने एक अदरिंग कर दी, और तो एक साइड पे अदरिंग कर रहे हो आप, लाल डोरे के थ्रू डिस्टेंस कर दिया, और बाकी साइड पे आप रैपिड अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन कर रहे हो। सो यू आर क्रिएटिंग दीज मैसिव unregulated spaces without taking stakeholdership of existing village populations, without even taking stakeholdership of the academic thinking minds। जैसे हमारी government processes में, with all due respect to our IAS officers, they are not professional town planners and architects। तो ना villagers की representation होती है। हाँ, yeah, exactly, and that is why we still appreciate whatever good there is in Chandigarh, because वहाँ पे कम से कम थोड़ा कंसल्टेटिव प्रोसेस था। बट अब ना आप विलेजेस की स्टेक होल्डरशिप लेते हो, ना आप रूरल कम्युनिटीज़ की स्टेक होल्डरशिप लेते हो। मास्टर प्लान बनता है किसी डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में, कागज़ वागज़ आ जाते हैं, एक नोटिफिकेशन आ जाती है, और फिर धीरे धीरे करके दिस विल टाई इन टू ऑल आर इशूज़ अबाउट पोल्यूशन, वाटर क्वालिटी। वेस्ट दिल्ली के कहीं एरियाज में वाटर क्वालिटी के कारण लोग बीमार पड़े हैं पिछले साल। इंदौर में तो अनफॉर्चुनेटली लोगों की डेथ्स भी हुई अर्लियर दिस ईयर। सो दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। सो इफ आई कैन समराइज माय आंसर टू ध्रुव's क्वेश्चन इज कि वी नीड टू मेक द प्रोसेस मोर इंक्लूसिव, एंड आई डोंट वांट टू से इंक्लूसिव लाइक ऐसे लिबरल से शब्द ने बस इंक्लूसिव बोल दिया। इंक्लूसिव ऑफ स्टेक होल्डर्स, do better stakeholder mapping, include the villages, include people who have studied town planning, people who have given it their life। और ऐसे लोग आए हैं हमारे पास। There are many on LinkedIn, Twitter, there are very good thinking minds। So government has to stop being lazy about it। Build up on that. Yeah, So I get what you're saying, and the statute precisely tries to address that, but fails to do so, in my opinion, for first and foremost this reason that we have started calling these villages urban villages. While trying to urbanize them, we have stopped the idea of democratizing the entire process, be it planning or policy making or anything. So the panchayat is of course a major stakeholder and a better stakeholder than an individual, and it is a better body to safeguard a the ecology of that place, b the culture of that place, and d the political rights of those people. So all of these things, I think the panchayat, which would have been a better body to get these voices into the institutions which are making the decisions, have been paralyzed. और जब तक वो नहीं होता, आई डोंट थिंक एनी काइंड ऑफ स्टैच्यूट दैट कम्स इनटू प्ले, बी इट बाय द डीडीए और एनी अदर बॉडी, वो इस चीज़ को डील कर पाएगा। आई मीन वी स्टेक होल्डर्स और इंक्लूसिविटी की बात हर स्टैच्यूट कर रहा है आज की तारीख में। इनफैक्ट इवन द न्यू LA एक्ट डज दैट, एंड इंटरेस्टिंगली द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो अंडर 142 हैज, आई थिंक लास्ट ईयर, it did away with the entire social impact assessment for a lot of land acquisitions which had in fact lapsed in Delhi. And because they wanted it to be done expeditiously, they said that the 142 will let go of the social impact assessment. So if, I think it is also the fact that commercial rights sort of they are given more importance because of how our jurisprudence and the legal profession has also, that is a different thing how it has developed. But what I'm trying to say is that commercial rights are given more importance than all the other socio-cultural rights and political rights of these people. So and because then these people are also, the villagers are also they're forced into a corner to take their commercial rights more seriously than their socio-cultural rights. आई थिंक इसमें बस मैं एक चीज़ ऐड करूंगा, एंड देन वील गो टू पुनीत भाई, टेक योर थॉट्स ऑन ऑल दिस। आई थिंक व्हेन यू प्रायोरिटाइज योर कमर्शियल राइट्स ऑल्सो, दैट बिकम्स अ वेरी इजी वे टू इंड्यूस डिस्प्यूट्स विद इन द स्टेक होल्डर्स। तो जैसे, और ये इवेंचुअली जैसे कोई ओरिजिनल लार्ज लैंड पार्सल्स ओनिंग फैमिलीज होती हैं किसी भी अर्बन सेटअप के बाहर, आई कैन राइट इट ऑन अ पेपर एंड गिव यू
I can sign it against my reputation and credibility that most of those families will have internal disputes about what to do with those land parcels. क्योंकि कहीं ना कहीं आपने developmental rights को secondary करके बस commercial rights, property rights का सपना दिखा के ये एक बड़ा सा plot इतने करोड़ों का हो जाएगा तो मैं अपने इस भाई का हक काट दूं, ये सब कहीं ना कहीं एक policy failure भी है. Or then this secondly ties into our judicial failures also, because the moment those brothers go to the courts, they will end their entire life just in dispute. उसका आउटकम कोई आएगा नहीं, इवेंचुअली किसी ना किसी को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ेगी क्योंकि उस फैमिली का फोकस ही वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो नोबडी इज इन अ वेरी इकोनॉमिकली साउंड पोजीशन. तो आई विल टेक योर थॉट्स आल्सो ऑन दिस गगन भाई, मैं आपको माइक देता हूँ बीच बीच में फॉर आवर व्यूअर्स एंड फॉर माय को पैनलिस्ट इफ यू मे ऑल्सो. मैं बीच बीच में थोड़ा उठ के कैमरा भी चेक करता रहूँगा बिकॉज वी आर डूइंग दिस एक्सरसाइज ऑन अ वेरी शू स्ट्रिंग बजट, सो या so please excuse me everyone. तो मैं गगन भाई आपको माइक देता हूँ and I'll just go check on the camera again. For sure. But you guys please keep carrying. Just to add on that कि एक level है भाई का, and the other level should be about a community. So the policy level problems को हम क्या community against community पे ले आते हैं, that kind of the hate that we see, that all these narratives that's coming out. So I think जो system है और जो policy है उसको हम like kind of we are not holding these things accountable, and we are thinking about something else, kind of again the othering and the margin, कि हम एक community margin पे चली जाती है तो दूसरी community वो center पे आ गई तो वो the kind of power dynamics, the kind of tussle between them. So वो एक level बढ़ता रहता है कि भाई के ऊपर community, community के ऊपर state, state के ऊपर देश. So we keep on fighting on that. जैसे मैं इसमें लेकिन एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे नागालैंड है, वहाँ पे जो उधर के बुजुर्ग लोगों के काउंसिल्स होते हैं, उनके पास थोड़ी सी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करने की भी ताकत होती है, जिसमें लीगल अथॉरिटी भी है एक तरह की. तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे हम लोग गवर्न अपने गांव को पंचायतों के थ्रू करते हैं, तो वैसे थोड़ी सी पावर्स या थोड़ा सा एक एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड, या कि why is that an issue say in the heartland more so in Delhi? Yeah. So oh shit, I'm sorry. So I think in the previous podcast that we did, I touched upon this for a bit, that Delhi is untouched by these statutes that you are talking about, because we have classified these villages as urban villages. और अब इन पे ये एक्ट्स लागू नहीं हो सकते जो वो पावर देते हैं पंचायत को टू एक्ट एज जुडिशियल बॉडीज. So this is happening across the nation. We cannot enjoy the fruits of that law. That is the issue. Again, the same thing, because the panchayats were destroyed here. और आप देखो जो शुरुआत में जो एक्ट आए थे DLR वगैरह, ये जो सारी ये बची हुई बेल्ट थी, ये इसको बचाने के लिए आए थे ना. बट DLR एक्ट लाने के बाद, उसको इतना इम्प्लीमेंट करने के बाद, लोगों के घरों में लठ बजवाने के बाद, ये सारी जो लैंड्स हैं ये ले आए बाद में अर्बन विलेजेस के अंडर. तो उसका पर्पस हुआ क्या? मतलब ईदर यू डिसाइड you want to let these villages be, let these agricultural lands be, or you go ahead and urbanize them. ये बीच की जो पॉलिसी मेकिंग है उसकी वजह से ही दिल्ली का भी हाल जो है वो है, जो लाल डोरा में जो लोग रहते हैं उनका जो हाल है वो है, और धीरे धीरे इन विलेजेस का भी ऐसे ही हो जाएगा, मुझे यही दिखता है आगे जाके. Yes. तो भाई मेरा आप तीनों से ही आप चारों से ही ये सवाल है कि we talk about policy, we talk about master plan all. ये जो पिछड़ापन एक वर्ड आया, इसके साइकोलॉजिकल और इसके हमारे इंसानों पे, हमारे लोगों पे साइकी जो है उसकी, वो क्या है कि मतलब हवाई पिछड़ापन है क्या, पहली बात. और उसके बाद वो पिछड़ापन हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि कुछ लोग आगे निकल गए, कुछ लोग पीछे रह गए, वो जो हाँ वो उस पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग है भाई. मतलब इसमें ध्रुव वाली बात को मैं इसको मिलाने की कोशिश करता हूँ. तो अभी हम जब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जब हम इवेंट कर रहे थे उसकी बात करें, तो वहाँ एक पुराना आर्काइव था 1966 का. तो जिस गांव से मैं आता हूँ, वो जैसे हम देखते कुछ दो गांव के साथ नाम लिए जाते हैं ना, तो हमारे गांव का नाम लिया जाता है आली मदनपुर. तो मुझे लगता था कि ये जो दोनों नाम साथ लेने हैं ना, ये ऐसी विद टाइम डेवलप हो गया. जस्ट टू टेल समबडी आप कहाँ रहते हो, तो आप just to make people understand where you located, you just to name two villages together. But when I read that archive, I realized that the gram sabha of these two villages were attached. In 1966, via an order,
first of all, these gram sabhas were divided, Hmm. and then one of the village was urbanized. Hmm. So the process of what we seeing as urbanization is a very smart process also, Hmm. because what we were talking about elders, when you divide two elders कि अच्छा अब एक गांव कह रहा है मुझे तो फर्क नहीं पड़ रहा, जो हिस्टोरिकली हजारों साल से कह रहा था कि हमें तो फर्क पड़ेगा अगर उस पर कुछ फर्क पड़ेगा. सो आई थिंक this othering comes with alienation also. So I believe that this planning is not very naive. Hmm. It takes a lot of work and a lot of Hmm. uh, Certainly. when I'm saying this, क्या लॉट ऑफ वर्क अनाड़ीपन है, या जो पुनीत भाई एक वर्ड बोल रहा है कि पिछड़ापन है क्या ये, Hmm. शायद से ये है. जो ये जो न्यू स्टेट फॉर्म हुआ, Hmm. जो लैंड को बहुत अलग तरीके से देख रहा है, जो लोगों को बहुत अलग तरीके से देख रहा है. मेरा कहना है कि जिस कल्चर से हम आ रहे थे हिस्टोरिकली, हमारी ट्रेनिंग आदमी की वैसी थी नहीं. For us, it will take a lot of pain and moral guilt to do something like this. So I think to understand the psyche, the new state, or the new how the law looked at land and people, the anthropological understanding of how they see land, it was very different from our indigenous ideas. Hmm. So ये जो ना जानना कि वो जो नए तरीके की जो एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग वो क्या है, मुझे लगता है ये हमारा पिछड़ापन है. Hmm. हम नहीं जानते कि लैंड को इतना ब्रूटली डिवाइड कर सकते हैं Hmm. कि कुछ हम ऐसे लैंड पार्सल बना सकते हैं जिनका एक्सेस टू रोड ही नहीं होगा, Hmm. या फिर हम इन लोगों को जो हजारों सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनको इतनी जल्दी पिछड़ा कर देते हैं, उनको इतनी जल्दी मार्जिन पे ले आते हैं. मुझे लगता है कि जो उस ट्रेनिंग से इसलिए शायद से वही द होल आइडिया ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, the people here were not trained in the English anthropological education of how to see land and people in a more what we say a commercial way or the industrialized way. And this I think हमारे बुजुर्गों के दिमाग में वो चीज़ बैठ गई कि ये तो कुछ और जानते हैं. नहीं, I think that is for me that is पिछड़ापन. Right. I'll also pitch into this. जैसे पुनीत भाई asked what is backwardness, what is पिछड़ापन. हम लोगों ने अपने दिमाग में कुछ जनरल प्रिंसिपल्स रख लिए हैं आज के दिन में, और वो स्टेट पॉलिसी में भी दिखता है कि PMAY एंड इट्स अ गुड पॉलिसी, आई एम अ सपोर्टर ऑफ इट, कि घर कॉन्क्रीट हो गए. तो रूरल एरियाज में कॉन्क्रीट घर होते गए, वी लुक एट दैट एज अ स्टेप ऑफ डेवलपमेंट. और फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रेगुलर हो गई, वाटर सप्लाई रेगुलर हो गई, वाईफाई आ गया. बट ये 3-4 प्रिंसिपल्स में अकेले डेवलपमेंट को मैं नहीं मानता हूँ. if I look at anything that is the opposite of backwardness, it is development, but that has to create some kind of welfare that is A, satisfactory, and B, financially viable. हम लोग जब अपनी villages को कंजेस्ट कर देते हैं और ऐसे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं और कोई अर्बन प्लानिंग विजन के साथ नहीं करते हैं, व्हाट वी डू इज, आई एम नॉट सेइंग वी आर इंड्यूसिंग बैकवर्डनेस, बट वी आर डेफिनेटली फेलिंग एट द डिग्री ऑफ डेवलपमेंट वी कैन अचीव. अगर आप पोटेंशियल 100% पे काम करने का है तो आप 22-25% पे पहुंच के अपने आप को वाह वाह शाबाशी नहीं दे सकते. दैट इज माई व्यू. सो आई थिंक urban land development, whether it has to be done first to enhance the quality of life of the urban villagers, as said, and even if for outsiders also, it has to go with a vision that outlives you. It has to go 20, 30, 40 years into the future. Then maybe you will create gains. एक छोटा एग्जाम्पल मैं यहाँ से दूर ले जाऊंगा कि हम लोग दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, गुड़गांव की बात कर करके लेट्स गो टू साउथ अमेरिका. वहाँ पे तो कुछ कुछ जगहों पे आज के दिन भी अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स हैं. And if we speak of development, many of them are also in the middle somewhere. There exist a lot of recently contacted tribes जो अब mainstream world में तो आ रहे हैं, and they genuinely have ways to sort of for example induce fire much quicker than we can with all our modern technology, lighters. They are expert fire starters. तो किसी मामले में वो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है. हमने बस अपने फ्रेम से उस आदमी को जज करना नहीं सीखा. So we consider him backward, but he is much better at weaponry, he is much better at surviving in the wild, much better at fire starters. तो ये एक indigenous communities की जो skill set है, जो हम इंडिया में भी कभी अपने larger psyche में absorb नहीं कर पाए, वो मुझे हमारा कहीं failure लगता है. यार पुनीत भाई जूती बढ़िया लग रही है. बट मुझे याद है आपने मुझे एक किताब दी थी. यू सेंट मी अ बुक ऑन व्हाट्सएप कॉल्ड द इन्वेजन ऑफ दिल्ली,
and I've forwarded it to as many people as I know. और उस किताब ने मतलब it gave me a lot of perspective when I read it with another book that came out. It's called The Battle of Narnaul, which tries to document the history of Ahirwal. एंड आई मेरे को थोड़ी पिक्चर समझ आई कि कैसे मतलब इट वाज ऑन अ वेरी माइक्रो लेवल इट वाज व्हाट हैपेंड टू इंडिया व्हेन इट डिस्कवर्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन कि मेरे को लगता है जब इतिहास पता लगता है तो उससे एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी भी आती है एंड राज ऑनेस्टली दिस लैंड वाज ऑफ पीपल हु वर द पीपल हु made the government who made the king, and these were people who actually they conquered these lands, and they were given land grants later on because of how they fought. But these lands, through the rule of law and because they chose to submit to the rule of law, were taken away from them without any benefit to them. So it is a little bit different from the indigenous tribes of South America, because we were left behind rather than not being incorporated into the system. The system left us behind slowly and steadily. And coming to the Ahir community specifically, uske saath bhi, if you see the Jonathan Peel Commission report that came out in 1858 after the 1857 mutiny, which created the divide between martial and non-martial tribes, you would see how every community in northern India was actually alienated from the process of development, and it started with the East India Company and the Crown itself. So they weren't given employment in the Crown, which usually was a policeman or a person in the army, in the military. वो उनको नौकरियां नहीं मिलती थी क्योंकि उनको नॉन मार्शल डिक्लेयर कर दिया जाता था because of the reason that they had participated in the mutiny. So the fact that you were anti-establishment at some point of time, you were slowly and steadily left behind in the entire development process, which in fact also continued with the new government coming in place. तो मेरे को लगता है हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, एंड द रीजन दैट दीज लैंड्स वर टेकन अवे, इट हैज टू बी मैरिड टू द फैक्ट दैट दीज लैंड्स वर नॉट जस्ट लैंड ग्रांट्स कि किसी ने बख्श के दे दिया तुम्हें ये ज़मीन. ये वो लोग थे जिन्होंने लड़ाई करी है इन ज़मीनों के लिए, और वो कई सदियों से लड़ते आ रहे हैं. एंड दिस इज़ व्हाट डॉक्टर संजय यादव ऑल्सो talks about, that these were the people who fought Nadir Shah and all of these people. They have been settled here because of all that blood and sweat. So taking that land so easily and then depriving them of a historical and cultural identity is criminal in my opinion. वेरी फेयर पॉइंट. मैं उसमें बस ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मेरी साउथ अमेरिका वाली एनालॉजी वाज मोर ऑफ अ इंट्रोस्पेक्टिव वन, कि हम शायद अपने ही डेफिनेशंस ऑफ डेवलपमेंट को लेके बहुत लिमिट हो गए हैं. So I just I'm quite moved by this historical anecdote that Dhruv Bhai just shared. Yeah, please. What Dhruv's saying. I think post 90s when Mandal Commission came, and even after independence, we as adults are trained in caste. Our caste training is very good, and that's why we know a lot of caste histories. All of us. I was also Very well said. I'm also coming from the same training to an extent. When I started working in Delhi Dehat, in my head, before understanding Delhi, I used to believe that this historical injustice is because of with my Gujar community, because again 1857 criminal tribes, and that has eventually resulted into what we're seeing right now. And maybe other communities have not experienced the same kind of thing in Delhi. Last month, I went to Ravta. Ravta is a Jat dominated village. Historically narrated, more strong, more in population, more educated. And what has happened with Ravta has not happened with any village of Delhi. That village, a big part of the village land is submerged under drainage water. You covered this. Yes, we covered Ravta, and I told this to a very senior advocate who comes from the Jat community, and he was shocked. But he does not come from Delhi. He comes from Western UP. So I believe that Delhi is a very different case study, because the kind of exclusion and marginalization you face here It's beyond caste. is beyond caste. And I'm not saying that caste does not have a role to play where we stand in our life. That's true.
But what happened with Delhi village is something more complex, and correct. that's what I'm trying to understand. That Ravata is submerged under drainage for the last 20 years. Where is Kisan Sabha? Hmm. Where is the strongest Kisan organization? Because you realize when it comes to Delhi, the key players are much larger, and the secondly, when we see the caste struggles along, say Ahirwati or say Western UP, the population is same throughout. So it's a 50-kilometer stretch, same caste, 70 villages. It's easy to identify and bargain with the idea of caste. Delhi is different. Every 2-kilometer things change, especially after migration and after 47. So I think Delhi has to be understood a little more deeply. And I'm saying every caste is discriminated in Delhi. You can come from any caste. Uh, I don't know the caste hierarchy. I'm very sure if Delhi would have had the highest Brahmins, they would even be discriminated if they had villages in Delhi, because this is how Delhi is. Also, it's like going beyond that. It's a civilization and a cultural challenge. You know that we share same kind of everything. You know, food, attire. We look same. The kind of thing that the politics of that identity that is coming up now. You know, कि आप दिल्ली के गांव के हो, है ना? वो identity has not been developed yet. And with urbanization, the changes of name. You know that every new month we hear some proposal like Narela's name will be changed to Vidyanchal, और मेट्रो स्टेशन के जो नेमिंग का पॉलिटिक्स है कि उसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, लेकिन आप उसका नाम क्या रख रहे हो बिकॉज ऑफ दैट narrative again. So I think it's a more of identity and civilization challenge that we are facing. Absolutely. To add to it, I was just talking to one of my professors who's an anthropologist. I come from Madanpur Khadar village. Historically, there are two very important civilizations that are developed on Madanpur Khadar. One is Sarita Vihar. Sarita Vihar literally means the city of the river, Sarita Vihar. Second is Kalindi Kunj. Kalindi Kunj is again, Kalindi is the synonym for Yamuna. Kunj is where Kalindi behti hai. Hmm? Sir, Pyao, yes, it's a Pyao. So, historically, this word Khadar is used more of an abuse. If you're from Khadar, you're seen as the othering. But this word Sardar is more elite. Kalindi, these words mean the same thing. Khadar is again a land which is along the river. Kalindi is also river Yamuna. Sarita is also river. But all these three terms, if I have to write on a piece of paper and I have to make uh, say a study, what's the basic understanding of somebody who resides in the vicinity, he will say that Khadar is something backward. Sarita Vihar is good and Kalindi is more elite, but they all mean the same. So this whole othering and so how we are engineering the society. Same with like they want to change Narela to Vidyanchal. Vidyanchal यहाँ नहीं है भाई. Vidyanchal is far away. How many Dwarkas would we have in this country? We have one Dwarka, Shri Krishna Dwarka. Now we have Dwarka here also. हाँ ये भी बनने वाला है. How many? I am saying कि अगर मैं अभी Google में लिखूँ विंध्याचल, ऐसे 50 कॉलोनी थ्रू आउट इंडिया नजर आ जाएंगे. And you want to name Narela Games into Vindhyachal? I don't know why. What is the shame? मुझे ये हल्का सा लेजी पॉलिसी मेकिंग भी लगता है कि व्हेन यू डोंट नो हाउ टू रिवॉर्ड अ कम्युनिटी और अ पर्सन और अ हिस्टोरिकल फिगर जी उनके नाम पे एक मेट्रो स्टेशन रख देते हैं या एक चौक रख देते हैं. आई डोंट थिंक यू शुड लेट प्लेसेस लूज देयर आइडेंटिटी लाइक दिस. बट जैसे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा बिकॉज नेमिंग हिस्टोरिकल फिगर्स इज सो कंट्रोवर्शियल इन इंडिया, बट एवरी हिस्टोरिकल फिगर हैज 30-40 सर्कल्स अराउंड देम. एक ब्रिज होगी ये भी उन्हीं के नाम पे, एक एयरपोर्ट भी उन्हीं के नाम पे. So I think this ties into this idea कि द्वारका है, दिल्ली में द्वारका है, ओरिजिनल द्वारका हमें पता है कहाँ पे है. अब विंध्याचल जो कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल हिल्स है, यहाँ भी आ गए. पूर्वांचल ईस्टर्न यूपी को कहते हैं. मैं 2-3 कॉलोनीज जानता हूँ दिल्ली में जो उस नाम पे हैं. तो दिस इज आई फील लाइक इट्स we have a much more distinct linguistic history than the Europeans. We should not fall into the same problem कि यॉर्क था यूके में तो न्यूयॉर्क बना दिया अमेरिका में. I think this is all laziness at its core and lack of imagination on part of, like I said,
ये डिसीजंस ड्राइव हमारी ब्यूरोक्रेसी करती है, और हमारी ब्यूरोक्रेसी बहुत इमेजिनेटिव नहीं है फ्रैंकली। आज के दिन में तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कहूँगा, दे आर नॉट क्रिएटिंग वेरी गुड आउटकम्स, which is tying into a lot of the struggles we are talking about. Dhruv, you want to add? Yeah. See, this is also how the colonizer would look at a population. मतलब गोरे ऐसे ही देखते थे हमें, that this is a civilization of tribes, and it happened till we discovered Harappa and the artifacts relating to Ashoka, so that gave us an identity. So this is what I was coming to when I was talking about history, that we need to be a bit more vocal about the history of Delhi's villages, so that we are able to create an identity around it, which is just not an identity of पिछड़ापन. क्योंकि आप देखो ये नरेला की जो कॉनोटेशन है वो भी ज़्यादातर शहरी लोगों के दिमाग में आई एम अज्यूमिंग यही होगी कि ये तो एक बड़ा बैकवर्ड जगह है नरेला. विद्यांचल ऑफ कोर्स साउंड्स लाइक अ गुड पॉश एरिया टू लिव इन, बट नरेला की अगर इतिहास लोगों को पता चले और वहाँ के लोगों के बारे में पता चले, तो perhaps even the people who are from Narela would have a different idea of their own identity, which they are slowly losing. And I think आप लोग क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस फील्ड में काम करते हुए, यू मस्ट बी टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल इन पॉलिसी ऑल्सो. And while talking to bureaucrats and people in policy, I have never come across a valid solution to the problems that we are discussing. And I think we should now focus more on that, because we have had enough discussions, and us personally, we have always seen these problems. But एक बार कोशिश करके let's just brainstorm. I want to know your outlook on the problem with the Laldora, provided that it's so saturated right now. What is the solution with it, and how do you see the Delhi Dehad project bringing up a new identity for our people? Can I start? Yeah. इसमें because I have seen the rigidity of our policy making in land development, urbanization, and villages, not just in Delhi. I have seen it in Bihar, I have seen it in Madhya Pradesh. तो दो तीन फैक्टर्स हैं जो थोड़े से कॉमन है. एक तो रिजिडिटी इतनी ज़्यादा है, और ये प्रोसेसेस बिल्कुल भी कंसल्टेटिव नहीं है. सो इफ आई हैव टू प्रपोज अ सोल्यूशन, a 3-tier solution that may, in my view, benefit a villager here in Daulatpur, maybe a villager in Samastipur in Bihar, maybe somebody in Balaghat in Madhya Pradesh. I have to say that I will start with saying that you have to first make sure that land related dispute resolution is fast tracked 30 times over, because this is a very convenient excuse that policymakers use to lock their processes. कि जी वहाँ पे तो लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं, तो वहाँ पे हम कुछ डेवलप ही नहीं होने देंगे. तो लोग तो फिर भी रह रहे हैं, बारिश फिर भी हो रही है, यहाँ पे बिजली के कनेक्शन फिर भी लगे हुए हैं. सो फर्स्ट ऑफ, आई डोंट नो, आई एम नॉट अ लीगल प्रोफेशन, बट मे बी समथिंग लाइक अ ट्राइब्यूनल स्टेट रन में, जहाँ पे फास्ट ट्रैक और कोई केस भी नहीं देखना, आप बस लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स को, या तो इट हैज़ टू डू विद अ फास्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, चाहे आप कलेक्टर को ही पावर दे दो, बट वो इट शुड क्रिएट आउटकम्स क्विकर, and it should create outcomes that are harder to challenge, so that you can focus more on delivering better policies. So I'm not saying कि यहाँ पे जुडिशरी ने कुछ गलत काम किया है, but it's simply their you good. It's simply their slowness. It is simply their slowness that has locked a lot of these processes. My point number 2 is that these processes need to become much more consultative than they are originally. हम लोग think tank से जितनी बात कर लें, हम लोग आपस में जितने forums कर लें, जो म्यूनिसिपल कमिश्नर होगा, जो डायरेक्टर ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, वो किसी से नहीं बात कर रहे. उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनके दिमाग में ये विलेजेस हैं, इधर के लोगों को या तो डिस्प्लेस होने दो, या कुछ स्ट्रक्चर्स तोड़वा दो, या पुलिस लगवा के पीछे पुश आउट कर दो. द idea has to become much more consultative, and the stakeholders in that consultation need to be, first, the local communities which are impacted, and second,
town and country planners who have studied architecture, land development, who know as a professional how things need to be executed. वो आज म्यूनिसिपल कमिश्नर है, कल को शायद डेपुटेशन पे डायरेक्टर बन जाए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, भारत से उसका फिर कुछ लेना देना ही नहीं अर्बन डेवलपमेंट में, जिसकी ज़मीनों पे ये इम्पैक्ट हुआ उसको रहना है उसके साथ. So our bureaucracy has to look inwards, do some introspection here. So there is a judicial reform required, there is a bureaucratic reform required, and I think last would be that some attitudinal civic sense type of issues where that is a much more personal philosophical view. वहाँ पे तो हम सबको ही काम करना होता है. So I think that's my view on if we have to preserve identities and if we have to create respectful kind of development. ये दो तीन चीज़ें कि faster dispute resolutions and much more consultative town and country planning outcomes. मैं कुछ शहरों में जानता हूँ 25-30 साल से मास्टर प्लान ही नहीं निकला है. तो भाई शहर के आसपास लोग तो रह ही रहे हैं ना, मास्टर प्लान नहीं निकलेगा तो लोग क्या कहाँ रहेंगे, ना बोरिंग अलाउ करेंगे और ना टैंकर लाने देंगे. तो मास्टर प्लान ही निकला तो आदमी पानी तो पिएगा ही ना, तो कुछ तो कर ही लेगा. फिर आप उसको बोलोगे जी ये सब अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, बिकॉज आप इलीगल नहीं बोलोगे, बिकॉज यू डोंट वांट टू पुट अ क्रिमिनल बर्डन ऑन द पब्लिक, बट यू विल नॉट मेक देम अ पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड काइंड ऑफ हाउसिंग स्कीम. तो अनऑथराइज्ड जी रहे हैं जी, लाखों करोड़ों लोग अनऑथराइज्ड जी रहे हैं हर शहर में. दैट्स माय last Definitely, take. it's a wonderful, very exhaustive a list of solutions. And also, when we started, we also, assumed that we need to help our policymakers to help us in return. Hmm. So we need to speak, and they have to listen. This is Well said. this is the dialogue that we have to establish. And also, kind of, Dhruv, when we just, kind of thinking कि क्या कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्या होगा. So it was just like, let's do a gentle nudge. Social media is a platform, है ना, to encourage youngsters, to come up. And I always say that कि अगर आप लिखते हो तो आप लिखो. अगर आप कुछ किसी भी कैपेसिटी से आप अपने लिए काम कर सकते हो, तो गेट आवर वॉइस अक्रॉस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि द पॉइंट इज दैट मैंने रियलाइज किया कि एवरी स्टेक होल्डर इन दिल्ली हैज ए प्रेशर फॉर्मेशन इन गवर्नमेंट एक्सेप्ट अस. तो वो प्रेशर हम कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं टू गो बियॉन्ड आवर विलेज, टू गो बियॉन्ड आवर कास्ट एंड गो बियॉन्ड एवरीथिंग. कि बस दिल्ली देहात के लिए और मे बी फॉर दैट मैटर, फिर अभी एनसीआर भी एक्सपेंड हो रहा है, तो वी हैव टू आल्सो थिंक अबाउट एनसीआर एज वेल. कि क्या कर सकते हैं टू बी मोर जेंटल. समटाइम्स इट विल नॉट बी जेंटल, बट इट विल बी ए नज कि क्या कॉन्वर्जेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं. दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन फॉर मी is the result, क्योंकि I know that I am doing it part time. I know that I have my own limitations. I don't know law, I don't want to learn law, but I want to initiate this conversation like this. So Delhi Dehat का मेरा perspective ये था, with people like you have all, the kind of conversation is very enriched now. क्योंकि पहले क्या होता था, पहले like यार हम कौन है, अब उससे conversation में थोड़ी सी mature होने मुझे दिख गई है, हल्की सी maturity youngsters में आ गई है ना, कि let's forget about all of these things and let's work together. कि भैया ये करते हैं, ये कर सकते हैं, ये तो आइडियाज आ रहे हैं. एंड आई थिंक इट्स ऑल अबाउट having seeds in the ground and then let it grow and prosper. भाई we were talking to some people who were in DDA before, town planners. तो जब स्टेक होल्डर कंसल्टेशन मीटिंग होती भी है तो दैट पर्सन वाज जेनरस टू टेल अस कि मैं कई बार सोचता था कि यार गांव के लिए प्लान बना रहे, गांव का आदमी नहीं है पूरी मीटिंग में कोई. एंड दिस हैज बीन, उसने कहा ये कांस्टेंट है. सो आई थिंक ये टू वे है, इनवर्ड आउटवर्ड है. आउटवर्ड्स तो ऑब्वियसली जो पॉलिसीज़ हैं उस पर जैसे आप बोल रहे हो कि वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो, कंसल्टेंसी हो, एक रिफ्लेक्टिवनेस हो कि इवेंचुअली आज दिल्ली के गाँव की डिमांड क्या है, नीड क्या है. ऑन द कॉन्ट्ररी सही वर्ड नहीं, ऑन द जो इनवर्ड प्रोसेस है जो पुनीत भाई कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि समझो कंसल्टेटिव मीटिंग हो भी और उसमें सब लोग बैठे हुए हैं और दिल्ली देहात, वी डोंट हैव पेपर्स, वी डोंट हैव PhDs. So we all trying to tell people ki write paper for us as in for Delhi Dehat, on Delhi Dehat, your village, whatever is your idea of Delhi village, do some PhD, so there is at least a literature. The biggest lack what I feel is literature, and I think Delhi Dehat mein we all trying to create a literature. And also secondary, we have many, luckily with God's grace, we have many IAS who follows us, many judicial officers, and I believe this is a little constant change, that when this IAS who maybe have seen one of our posts or this judicial servant
who would somewhere have a writ jurisdiction later in his life, when he would pass a judgment or that IAS will pass a policy, he will have a little reflection of the city. That's our biggest aim, and I always propagate this, and I take this banner in my hand. We need to have high court judges from Delhi villages. Simple reason, when we are two lawyers here, whenever there's a matter about Delhi, it frustrates us to tell a judge that there are villages in Delhi and how different they are from where you come from. Everybody in this, especially in this country, comes from a village, but their idea of village is very different from how we see Delhi and the complexity of Delhi. So I think just a communication between stakeholders in power and stakeholders who are affected. Thank you. Yeah, I totally agree with you. एक चीज इससे मेरे को याद आई, which is a very consequential question that I have for all of you. और मुझे आज तक इसका ना आंसर मिला नहीं. Maybe I lack the knowledge of the history of this. आज तक रिजर्वेशन क्यों नहीं मिली है दिल्ली के लोकल्स को कहीं पे भी? बिल्कुल भाई. भाई बहुत इंपॉर्टेंट टाइम भी है. दिल्ली जुडिशरी नो रिजर्वेशन किसी भी तरीके की, अगेन द डोमिसाइल रिजर्वेशन, जिसको हम अभी जो बात करना चाह रहे हैं कि दिल्ली का कोई डोमिसाइल वाले आइडेंटिटी क्यों नहीं है. भाई इनजस्टिस है भाई. दिस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं बिल्कुल लिबरल करके नहीं बोल सकता. ये बिल्कुल इनजस्टिस है कि आप एक तरीके की पॉपुलेशन, क्योंकि सारे स्टेट का दिस इज अ पॉलिसी थ्रू आउट इंडिया कि जो इंसान जिस स्टेट पे आता है वहाँ उसको प्रेफरेंस. सिंपल एग्जांपल दूंगा, कोई लड़का भोपाल से है, क्लैट देता है, तो उसको NLIU भोपाल में डोमिसाइल रिजर्वेशन मिल जाएगी. तो सिंपल, आप ही कंटिन्यू करिए. So I think the only place that Delhi people get a domicile, and then I will rephrase myself, is people जिन्होंने 10वीं और 12वीं दिल्ली से करी है, उनको अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एक तरीके की रिलैक्सेशन मिलती है. But we are dwelling upon a more deeper question. The मूल निवासी idea. The Mool, and I just don't see it as a Mool Nivasi. Why don't we see these people who are the foundation of the city? If they would have not left their lands peacefully and coexisted, क्या दिल्ली ऐसी हो पाती? And I think this has to be, and this is not our challenge. I think this, if Delhi is a democratic, civilized state now, the people on that side need to appreciate this, and they need to start this demand that these people have a contribution in this nation building, the state building. They should be given a little tribute. End of the story. इसमें एक छोटा सा फनी एनेक्डोट ऐड करूंगा. 10वीं 12वीं दिल्ली करने के क्राइटेरिया से मैं भी दिल्ली लोकल हूँ, बाय सिंपली दैट क्राइटेरिया. तो मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ मैच होने से पहले सबसे पहले इको ऑनर्स मुझे अंबेडकर यूनिवर्सिटी पे ही मिला था, बेस्ड ऑन दैट रिलैक्सेशन क्राइटेरिया. तो सॉरी, मतलब आई डोंट मीन टू मेक मतलब, बट एक ह्यूमरस एनेक्डोट उससे है कि आई एम इफेक्टिवली नॉट अ दिल्ली नेटिव, बट ये क्राइटेरिया कैसे लिमिट होता है वो मैं आपको पर्सनल एग्जांपल से बता सकता हूँ कि दिस इज अ वेरी लिमिटेड selective criteria. I am just saying that we need to, as villagers of Delhi, need to write, need to propagate, need to stand that this process of urbanization is a historical wrong. It has to be understood as a historical wrong, and like all the historical wrongs in the world, they are compensated in a lot of ways. It Absolutely. could be a lot of ways. One of the ways in Delhi, it should be that farmers whose land was taken for the development of this city, their children should be given certain benefit in the educational institution. It will really change things for the villages of Delhi. Yes, that's the bare minimum, and it actually marries into about what I was saying about the history of these villages, how they came about and how these people settled here. For instance, जैसे उस दिन हम जब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी गए थे and we were being shown that documentary about Katware Sarai, somewhere during that documentary we were also informed that Katware Sarai was a land grant by Maharaja Surajmal to all the soldiers who had fought there. So what I'm trying to say is वो जो the kind of rights they had given up and the kind of the ways in which they were compensated, वो वे नहीं कर पा रहे हैं ढंग से कोई. मैं मतलब I cannot find an equilibrium anywhere in the policy structure. And I think there is a sort of cognitive dissonance in the community itself because no one has been talking about it. Even politically, I don't see anyone ever talk about this. मतलब I might be wrong,
with regards to the history of politics in Delhi, but मैंने कभी personally सुना नहीं and it quite surprised me. I even had a conversation with my father about this कि आप लोगों ने ये बात करी क्यों नहीं, ये बैठे क्यों हैं थे? I think I have tried to find answer to what you're saying is uh, when all this process was happening, we are the first middle class that has emerged from Delhi villages Yeah, right. who studied liberal sciences, social Correct. sciences, and then we can think upon this. I think it's a Right. process. Right. भारत की आज़ादी में 200 साल 250 साल क्यों लगे? Hmm. Because when people went to Europe, when they studied, they realized that Right. what is happening to us is injustice. I think same with Delhi villages. Hmm. That this is a new middle class that has emerged who can think now that Correct. this is injustice. आई थिंक मैं ही इसमें लास्ट चीज़ ऐड करूँगा बिकॉज आई एम सॉर्ट ऑफ a external sort of view, but I feel passionately about especially development of village communities, town planning and all of that. तो मेरा एक last conclusive statement ही रहेगा कि this degradation will continue till processes are not consultative and democratic. मैं start भी consultation से ही किया. हमारे systems इतने ज़्यादा एक तरह से rigid भी हैं और एक तरह से they our systems push a lot of people out. So I'll give you a small example that even if a IAS officer who joins, say, Ministry of Housing and Urban Affairs as a joint secretary, develops interest in these issues, starts to execute some processes. एक तो क्योंकि इतने जगह से लॉक्ड होता है, उस बेचारे को भी बहुत टाइम लगेगा एक दो जगह कोई इफेक्टिवली पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में. बाय द टाइम इट हैपेंस ही विल रिटायर एंड बी पुश्ड आउट ऑफ सर्विस, देन द सिस्टम विल नॉट इवन हियर हिम. So there are many very small things that are leading to very big losses. You know, so even if you get good talent, there are very few people who want to hear him. The people in the system who are making these decisions are changing very rapidly, or there is a huge rapidness to the way these people are changing, but the way the policy is going is still very rigid. तो वो एक बहुत discrepancy है. I don't know if I'm making sense. तो कहीं से पोटेंशियल लॉक्ड भी है. हाई कोर्ट जजेस की बात हुई दैट इफ दे आर नेटिव्स ऑफ दिल्ली दे विल अंडरस्टैंड द स्ट्रगल्स ऑफ द पीपल हियर. एंड I want to stay a step further than that and say that despite that also, even that high court judge will have a limitation till the larger practice of not giving judicial outcomes in time doesn't change. This culture has to change कि आपके cases 10-10 20-20 साल चल रहे हैं तो किसके पास patience है भाई. घर चलाना होता है, चूल्हा जलाना होता है घर पे. So that's my conclusion. I think I'm done for the As a closing remark, and this is what I also understood from the discussion, कि सबसे पहली चीज when it comes to inclusivity is that it should also come with something that enables the people. And I think what you guys were saying about documentation, I think it is very important what you guys are doing, because I think documentation and education are the only things which also enabled us, in fact, in helping us speak about these things and also realizing the wrongs. So first and foremost is even when it comes to making stakeholders from villages parties in these discussion, that will also happen once they are enabled enough. बिकॉज वो किसी भरी पंचायत में भी तभी बैठ के कुछ समझदारी वाली बात बोल पाएंगे जब उनको कोई समझदार बनाए, पहली बात. और मैं ये नहीं कह रहा वो समझदार नहीं होते, बट इन द काइंड ऑफ डिस्कशंस दैट गो इनटू प्रिपरेशन ऑफ अ मास्टर प्लान, an individual from a rural background would not, of course, have the same ideas in his head that a person who is an IAS or a person working in DDA or an engineer in DDA would have. So you have to enable them for them to have the capacity to give their inputs in a better way and in a more holistic way for the larger context as well. I think those were at least mine and Dhruv's closing remarks. Gagan, why do you have anything more to add? I think, yeah. A very beautiful sunny day in Daulatpur village. We have concluded our conversation. We hope to have many more. Shout out to Eric Fromm. Shout out to Dhruv. Shout out to Sir Devansh भाई. हम लोग आपके घर पे शूट कर रहे हैं, आपके विलेज में हैं. So thank you for having us today. I want to keep having these conversations, discussions on YouTube, on LinkedIn, wherever, till the time, like Puneet bhai said, that we have a lobby or a set of people who can speak these voices to the highest echelons of power. That when you can drive a message to the power corridors, eventually somebody starts to listen, because
after all, vote bank politics, nature is such. Eventually you organize yourself and you speak your conversations. सुनने के लिए भी लोग मिल जाते हैं, जैसे आपने कहा कि इनवर्ड आउटवर्ड दोनों तरफ प्रोसेस चलता है. Thank you so much for joining us, and we hope to do this again very soon. Please like, share, subscribe, and please comment your thoughts, your experiences. We like to keep our platform very interactive, so please give us your thoughts, give us feedback, and keep tuning in. Thank you.